मोबाइल लेना है। Hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible and visible to all of you? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, am I audible to all of you? गुड इवनिंग खुशबू कुलरिया। फटाफट इस सेशन को आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, या प्रिपरेशन कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स, Sgpgi और बहुत ही अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वर्किंग है। तो ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है, हम सब लोग अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर कोई चीज प्रायोरिटाइज करते हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पे चीज रखी जाती है वो फॉरेन के अंदर जाके एज ए नर्स जॉब करना एक प्रायोरिटी हमारा रहता है। लेकिन उस प्रायोरिटी के अंदर हमको इतना पता होता है कि देख, अगर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है ना, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि हमारा अगर यहाँ कुछ नहीं हो पाया तो हम बाहर जाएंगे, है ना। एक सिनेरियो ये होता है, एक सिनेरियो ये होता है कि हम हमारी विलिंग से होते हैं ना, लाइक हम अपने करियर को लेकर के हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम चीजें सीखना चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ करके अपनी जो रूटीन होता है उसको छोड़ करके एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा मूव करते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छे एक्सपीरियंस मिल सके, है ना। तो सभी चीजें हम लोगों के माइंड में रहती हैं, तो हम सब उन चीजों को आज क्लियर करेंगे कि क्या डिसीजन हमें लेने चाहिए, या सिर्फ इतना जान लेना। जैसे ही हम फॉरेन नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें फॉरेन में जाके एज ए नर्स वर्क करना है, तो हमारे माइंड में 2-3 एग्जाम्स आ जाते हैं ना, लाइक NCLEX, OET, है ना। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्स हम लोगों के माइंड में आते हैं, लेकिन सिर्फ वो एग्जाम क्लियर करना ही काफी नहीं है और उनके सिर्फ नाम पता होना काफी नहीं है, उनके लिए हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने भी बस जितना आप लोगों ने सुना है मैंने भी उतना सुना और जाना है कि हाँ ये एग्जाम होते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और आपके लेवल पे जब अंटिल अनलेस आप लोग अभी तक एंटर ही नहीं किए हो ना, आपको सिर्फ नाम पता है और आप अपने मन में एक ऑप्शन लेके बैठे होते हो कि हाँ ऐसा करना है, बट हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या प्लस है क्या माइनस है ना। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, और उन चीजों को बहुत अच्छे से बताने के लिए आपको वही इंसान बता सकता है जो उस चीज को अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, उस चीज को फॉलो कर रहा है ना। तो मैं आप सभी लोगों को मिलवाना चाहूंगा मिस लिया क्लारा जोसेफ से। वेलकम लिया। तो लिया आपके सामने है और ये आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि रिसेंटली इन्होंने NCLEX-RN का एग्जाम है जो क्लियर किया है, ठीक है। और इससे पहले ये मेरे साथ एम्स के अंदर वर्किंग रहे हैं और अभी भी रिसेंट में भी अभी वहां पर ये वर्किंग है, लेकिन फ्यूचर प्लान है इनका आगे कुछ चीजें फॉरवर्ड करने का अपने करियर को लेकर के। तो पहले मैं इनसे इनका इंट्रोडक्शन लूंगा, इनका जो भी
क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड था, जो भी सब चीजें थी पहले ही आपसे शेयर करेंगे। देन उसके बाद ये एग्जाम रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो लिया। Hello, sir. Hello all. So I am Liya Clara Joseph. I'm basically from Kerala. So I did my graduation in nursing from All India Institute of Medical Science, New Delhi. Later, I gave my Norcet via Norcet 2 in 2021 and joined as a nursing officer in AIIMS, Delhi. So currently, I'm working as a nursing officer in pulmonary department. Actually, MOHSIN sir was my colleague before, so I just got transferred to other department. So that's about me. That's all about me. So recently, actually, I had a dream to work abroad in any country, especially European country or even countries like Australia. Like I did a research properly. I did a research regarding that. So from that, I get to know that like a lot of people are unaware. Like many nursing graduates who graduated from India are unaware of the career opportunities what they have abroad or overseas nursing careers. They are not aware of that. So I felt I should share some details regarding this. That's why like once I got an offer from MOHSIN sir, I contacted, like I was very pleased to join with him. So like I will be totally discussing about overseas nursing careers, mostly focusing on Australia, Canada and USA, and also some European countries, like that's all. And especially about NCLEX and OET. You may have heard about NCLEX-RN exam because once we gave our Norcet exam, we have referred many books, NCLEX based books like Saunders, Mosby and all, right? So likewise, NCLEX. So you may be knowing that term only. What is NCLEX? And also, I'll be discussing about OET. OET is also a very renowned exam what we hear recently. It's an occupational English-based English test. So I'll be explaining that too. So first of all, once we comes about overseas nursing careers, we'll be having a lot many doubts, like we are leaving our home country, moving to a foreign country, how our life would be there, how our professional life will be there will be doubt for us. So I do had that before, like because I'm gonna leave a government job which I'm very settled here, so I'm moving to other country, so I should have some much more benefit. It should be much more beneficial than my current state, right? So from my research or from my research or once I talked with my friends or colleagues and other family members who works there in abroad, I got so many points. So I'll be discussing. Once we talk about overseas nursing career, it has both pros and cons. Like we could say, it has a lot of so many benefits actually. Likewise, it has some cons too. So I'll be discussing both. First thing is, it's our career, because we are moving to some other country for a good career opportunity, as a career opportunity. So being a BSc Honors Nursing graduate, I'll be thinking of an upliftment in my career, right? So I want to have to be someone in my profession. I want to have great achievement in my profession, right? So that's the main thing, because if you settled in India, like you cleared your Norcet, you get into Norcet or any other government exam, you settled in India, and then once we think about moving to foreign country, the main thing that you have is that your career. Your career. So here, once you get into government job, you will be paid well, but there won't be a recognition. You can't be specialized in a particular field. Like you may need to, because from my personal experience, I liked mental health nursing a lot. So during my graduation, I felt like I should do something in mental health or psychiatry. So I liked psychiatry and both psychology too. So I need to do. So in India, once I researched, I felt like we don't have much opportunities, and I like to explore too. So that's why I thought I'll move to some other country. Then I get to know that there in foreign countries, we have specialization for nursing too. Like if you want to become a nurse anesthetist, that is possible. And if you want to become a psychiatric nurse,
or ICU nurse are, you need to attend few courses and some skill test will be there. Later you will be recognized as that nurse and you will be paid accordingly. Another benefit of being working in a foreign country is about the hours you're working. So each and every hour you work. We are here in India, like we can take Indian scenario. What is it there? Like in India, we'll have a fixed pay scale, right? We'll get increment and we'll have growth in that way only. In salary base, our growth is in that way too. But in foreign countries, each and every single hour we work will be counted. Yes, each and every single hour will be counted, and that hours can be credited as our experience too. Here we will be like, okay, I have 3-year experience. There, mostly our experience are counted in base of hours. How many hours you have worked. So that is the other benefit. Talking about the other benefit, then I would say that if you are, you will be much paid. Comparing with India, like where our starting salary is from 70 in government sector, and private sector, somebody who is working in private sector, they may be getting 20 or just about 20. So in that aspect also, we will be paid much higher. Like if we for example, for instance, if we take Australia as a country for seeking job, so a nurse will be paid a minimum of 3 lakh once we convert Australian dollar to Indian rupees. So that is pretty nice amount. But there are some cons too. So when talking about the cons, the living standard, okay, one more benefit is there. Actually, it is the living standard. We will be moving to, if we move to a developed country, the living standards will be as much as the living standards will be matching that too. But so that is also a benefit. Whereas once we talk about the cons, so one second. Hello, hi. So talking about the cons, the main problem is like, main thing itself is that we are leaving our home country. We get rooted to some other country. There we have to deal with the local people, their living style. So that there could be some difficulty in that aspect. That is the main problem you may face in a foreign country. Whereas more than that, there in most of the developed countries, the living expense is much higher than a developing country like India. So even if you get paid more, then expense is more. But there is a benefit in that aspect. Because even though our tax may be deducted, like our living expense is higher, but they will be giving us nice payment. Also, our family will be insured. Like they will be giving support, health insurance and other supports to our family. Our dependents will be highly good supported there in those countries. So these are basically about the overseas nursing careers. So next we will be moving to our basic main topics, that is NCLEX-RN and OET. So what is NCLEX-RN? NCLEX-RN, you may be very familiar with NCLEX-RN, right? Heard about NCLEX-RN. Somebody who gave Norcet will be very familiar, because we refer books from NCLEX-RN. We refer books related to NCLEX-RN. Because during my Norcet exam, I referred Saunders and Mosby's mostly. So that also helped me once I gave my exam for NCLEX. NCLEX-RN is sorry, okay, wait. So NCLEX-RN is its expanded form is National Council Licensure Examination for registered nurses. So this is an exam. This is a licensing exam, because in India we know how will we get licensed to practice. Once we clear our 4 years in graduation, we passed our exams, all exams. Then what will we do? We'll register in a particular state council. Like I got registered in Delhi Nursing Council, so everybody will get registered in their respective state councils. So in many countries,
that is not enough. They want some other exam. They conduct some exams to make health professionals practice because we are dealing with people, right? We should be competent enough to practice That's the reason. So NCLEX is a licensing exam. So it gives you license to practice in that respective country. So this exam is developed and owned by NCSBN. It's a body called NCSBN. And it is basically done for 3 countries. This exams is conducted by 3 countries to give license, which are Australia, Canada, and USA or America. These are the 3 countries which recognize NCLEX, and they want NCLEX for registered nurses to practice. So, but even though the exam is owned and administered by NCSBN, but we have to go through the verification process of this respective country. I'll take an example. For example, if you want to go through the process of, you want to settle in Australia, you want to work there in Australia, so you have to go through the process of AFRA first. AFRA is a body which give you eligibility to apply for NCLEX-RN exam. AFRA is the body for Australia. For in case of Canada, you have to go through verification of NNAS. That's the body which give you eligibility, and USA we have to go through CGFNS. So these are the verification process which you have to go through before giving your exam. So the first step in all these 3 cases is you have to make a profile there in this respective regulatory bodies, like AFRA in case of Australia, NNAS in case of Canada, and CGFNS in case of USA. So once this verification process may be for like 3 months. They will take that much time to give you proper eligibility. For in case of AFRA, like they'll assess your education credentials, your registration in particular nursing council, and your experience too. Experience also matters. In India, like there are people who get graduated and may have a gap, so they may need to verify that they have to authenticate like whether you are a proper nurse or not. So that verification process may be lengthy, and they will contact a college, respective college, council. So those verifications may done. So within 3 months they will do this, and they will give you a mail. That mail is very important because that is ATT, authorization to test. So authorization to test is something which authorizes you to book your NCLEX-RN exam. You can do it in anywhere in the world. Like previously, we need to go to those respective countries to write this exam, but nowadays we can internationally schedule it anywhere, because I did it in Delhi only. Likewise, anybody can do it in anywhere. So authorization to test. So you will get, once you get your mail, within 6 months, you will get a 6 months gap. So in the 6 months, you have to book your NCLEX. That's the time period. This is valid only for 6 months. So you can start your preparation also based on that. Like I prepared, to be frank, I prepared my NCLEX exam for in 2 months. I booked my exam on a month, on a particular date, and within 2 months I prepared and I gave my exam. So likewise, if you want more time, you can do. If you can give it in a month, then you can give. That's your choice. But keep in mind, it's totally about 6 months. Okay. So then you can internationally schedule it. But for scheduling it internationally, you have to pay some fees. That is roughly around 10,000 in Indian rupees. It's around 10,000 rupees. And for verification process also, the charges may be different for different countries. Like in case of Canada, NNA's process may charge you around 57,000. 57,000 for the verification process, and later for booking NCLEX, it may be around total, like it is a kind bit expensive. The booking and the process is bit expensive, but it's worthy for the salary or the lifestyle what you are going to get later. That's the thing. That's it.
And in case of Australia also, for the whole process, because I did my NCLEX process through Australia. So it was, it costed me around 50,000 for the verification plus NCLEX booking. And including with that, I paid around 10,000 for international scheduling it. So that is about the NCLEX-RN booking and all. Later, once you cleared, okay, you gave your exam and you cleared your NCLEX. So what's the next process? Each country has their own processes. Like in case of Australia, Australia demand an OSCE too. They have an OSCE. That's a kind of skill test. Australia has an OSCE. So which is around 4,000 Australian dollar. That is roughly around 2 lakh. 2 lakh to 3 lakh. In between 2 lakh to 3 lakh. That's the rate of OSCE. But OSCE you need to go and give. You need to move to Australia and then you need to give the exam, OSCE exam. Whereas in Canada, you don't need to move, but you don't have any OSCE or skill test there, but you have to, after this NNAS report or NCLEX, you have to register in a particular state council. For state, they call it province. So you have to get registered in particular province. Like, provinces means? Province registration. And USA also, like once you give your NCLEX, you have to go through registration process. So these are the basic idea about NCLEX and all. Now I'll be moving to exam. I'll be talking about the NCLEX exam pattern. How is the NCLEX exam pattern? So NCLEX is a computer adaptive test. This is very unfamiliar for us because somebody who gave exams in India, what kind of exam we used to give? There will be a preset questions will be there, and there will be a prefixed date. Everybody will be going and giving their exam in a particular date, and we will get our results based on a rank list. Even if the exam is very well too, but it's completely, we will get selection just based on our rank, right? Even if you performed well also, rank is something which matters. But this is something different. The main benefit of NCLEX-RN exam is it's not a competitive exam. So if you perform well, you are gonna get nice score, and it's not, you are gonna pass the exam. Exactly. So I'll talk about this computer adaptive test. Computer adaptive test is a type of examination in which the system or the computer assesses us through each and every single question you attempt. So here all questions are compulsory. You can skip a question. You should attend throughout the question. You will be attending, and they will assess through each and every single question. So the minimum question you may have to attend is 85, and maximum is 265. So this is a question range. But we can't predict at what question you will be clearing this exam, because in my case, like once I gave my exam, the system shut it off at 85 questions. So that was a bit scary, because once I gave my exam, system shut it off at 85. That's a bit scary because we don't know whether we passed or failed, because this is the minimum question range too. So the system said that, so displayed that you finished your exam. That's all. But later, I get to know in 6 weeks they'll publish the results. But before, I got my results in 3 days actually. They gave me a mail stating that I cleared my NCLEX. Because you know the reason behind why this 85 question thing. In 85 questions, there are 2 chances are there. Within this 85 questions, the system may assess you as competent enough to practice in that particular country or clear that NCLEX. Then you will be, the system finds that there is no need to assess you further. So that in that case you will pass. Or in another case, if system finds that you are not competent enough, or you can't, it's useless to ask many questions. So that in that case also system may shut down. There are people who pass it to 65 question, and there are people who fail it to 65 question. The maximum time that you have is 5 hours. In my case, I finished it in 2 hours.
because I cleared, like I got my system shuttered off for 85 questions. So it took almost 2 hours for in my case. Then about the exam pattern. Exam pattern, NCLEX now, there are some, second. Okay, there are some difference in NCLEX pattern since 2017. That is, now NCLEX is known as Next Gen NCLEX. NCLEX is called Next Gen NCLEX. It's an advanced form in which the questions will be completely based on scenario based. Like it's more practical oriented than theory based. Scenario based questions, like I can give you an example. So they may be asking, the question will be like this. For example, there is a patient who came into emergency presenting these many symptoms. So the following questions may be based on the vital signs, based on the lab values, or the presenting symptoms of the patient. So based on that, questions will be asked, and possible diagnosis, they may be asking possible diagnosis. Those are scenario based questions. And I think this is a pretty easy type actually. It's for me, I felt this is an easier technique, because from the symptoms itself we will get to know, okay, what are the conditions what the condition patient may be having. So that was very helpful actually for me. I got, I think, 4 or 5 scenario based questions, and rest of the questions include drug calculation, just like Norcet, it has drug calculations, even MCQ, multiple choice questions too, but much more clinical oriented, not theoretical, like exactly, okay, what is the size of the needle used for intramuscular injection. That is not the pattern of question. It's about the symptoms patients present. It's about it's more patient oriented. What is the significance of like patient safety, patient's prioritization, how to which patient you will be prioritizing in that case. So that is a difference I felt when comparing with Norcet and NCLEX. So this is all about NCLEX exam and its pattern. So now we will be moving to, if you have any doubt, you can ask at last, okay? So now we will be moving to an exam called OET. Many may think that like clearing either OET or NCLEX is fine. No, because we are internationally educated nurses, right? EIEN. We are internationally educated nurses. We have our own local languages, our own, like as I speak Malayalam, as I'm from Kerala, I speak Malayalam. So once we are moving to an English-speaking countries like Australia, Canada, UK, Ireland, USA, so they need to know whether we can communicate with their patient, because our profession is much more related to communication, interpersonal skills and all, right? So in that case, they need to check whether we are competent enough in communicating. So there comes the role of OET exam. OET can't never be compared with NCLEX, because we need to give, actually NCLEX is a licensing exam, as I said before. OET is a language exam. So OET can be compared with IELTS. This is also a familiar exam, because if anybody moving to an English speaking country like Canada, they must give this exam, IELTS. But what peculiar about OET is that it is special for, it's specially designed for healthcare professionals. Even let it be doctors, dentists, pharmacists, if they want to move, they can give this exam. This is specially designed for healthcare professionals. The main benefit about this exam is that the task, okay, one more thing is there, they will be assessing us in 4 parts, 4 aspects of language, which are writing, obviously, speaking,
reading and listening. So these are the 4 aspects of language. So they will be assessing us through these 4 parameters. So we will be having separate tests for all these things. Like for writing, I can explain. For writing, they may be giving you are supposed to write a letter, but as I said before, it's an occupational English test. So for nurses, mostly it will be hospital setting based questions. In case of writing, they may be asking us to write a transfer letter. Like if you need to transfer a patient from your department to some other department, write a transfer letter to the healthcare professional there. So those are much more easier for us. See, like we are dealing with patients, we are familiar with hospital setting. So if we get a question related to that, which is very good, right? So in that case, this is also right, it's nursing based. Even speaking, we need to do a role plays. Role plays means the examiner will pretend as a patient with some presenting symptoms, and we need to interview them. Like we need to take a history. The patient will be, the examiner will be role playing, like presenting with, I'm having an abdominal pain, I'm having pain here and there, and like they will be presenting symptoms. So as a nurse, how will we communicate to that patient? That is what will be seen in speaking session. So it's a proper role play. You need to do 2 role plays, and this may last around 20 minutes. This won't take much time. It just lasts for 20 minutes, and writing is for around 45 minutes. In case of reading also you'll get comprehensive passages related to healthcare, any disease. It could be any diagnosis, any diseases, and which may include clinical presentations, everything. So it will be very helpful for us to write it and pick up the answers very easily because we are familiar with that setting. So reading it is around 60 minutes. Then comes listening. Listening is also, we will get conversation between a doctor and a nurse, or maybe between a patient and nurse. So we have to hear, but the thing is that they may be using some foreign accents, English accent. We are using Indian English accent, right? There they may be using foreign accent. So with practice, we can get to that. Practice is very important. So these are completely, this exam, the success in this exam is completely based on practice. How much you practice, chances for you to get, because this is completely based on, it's a kind of skill only, right? Language, learning a language is a skill. So this is that. And for many countries, for all English speaking countries, the scoring is different. For OET, like most of its grading is based on A, B, C, C+, C. These are the scoring. So most of the countries demands a B score. Overall B, like an average basis, they want B in all those 4, like for speaking, writing, reading and listening. Some countries exempt, it's okay to get C+ for writing in few countries. C+ is fine. Now I'll be comparing OET with IELTS. So now I'll be comparing OET with IELTS. OET, the main benefit of OET, I said, why healthcare professionals seems OET to be more beneficial, because it's about the familiar environment. It deals with familiar environment. Whereas IELTS, you may get questions from any areas, anything. The task may be general based, like anything. Like you may be writing a letter to a manager, you may be writing a letter to some company officials, likewise. And IELTS other benefit is that OET, so OET scores here, whereas OET is comparatively easier for nurses or healthcare professionals to get scored in OET. And about the fees, it is around 66,000 in India for OET, whereas for IELTS, it may range within 17,000. So that's a double difference, like it's almost double. In that case, IELTS wins actually, because we don't need to pay much, but our aim is to get chance to move to other country, right? So in that case,
I as a person, I would prefer, from my personal experience, I would prefer OET for somebody who need much more time to, or who is a bit weak in English. I prefer OET. Whereas somebody who feels yourself as a proficient one, then you can move to IELTS. That's your choice. So I think this session helped me to get a proper overview about overseas nursing career and about two major exams like NCLEX and OET. So if you have any queries, you can ask in comment section. Thank you so much, Liya, for this very nice information. I think मैं खुद अवेयर नहीं था इतना सब कुछ होता है. Yes or no? चलिए, तो बेसिकली अगर अभी तक जो हमारा सेशन अभी तक जो हुआ है, इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें, है ना, तो हमने एक्चुअल में जो हमारे माइंड में जो वर्ड्स रहते हैं, अगर मैं इसको एक बेसिक्स तरीके से कंक्लूड करना चाहूँ तो, इफ आई एम रॉन्ग, लिया प्लीज करेक्ट मी, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट इन अ सिंपल मैनर. बेसिकली हमने कौन कौन से एग्जाम्स के बारे में, एक हमने देखा सबसे पहले एनक्लेक्स के बारे में, ठीक है, जो वर्ड हमने सुना है बेसिकली, है ना, मैक्सिमम टाइम पे. देन ओईटी, देन IELTS. तो आई थिंक जो मेरे को आइडिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनक्लेक्स एंड IELTS जो है आपका एक तरह से कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जाम देना होगा, है ना. लाइक फर्स्ट वी हैव टू गिव IELTS, यानी हम पहले, लाइक इट इज ए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जिसे हमें देना होगा एग्जाम, और इसे क्वालिफाई करना होगा. आई थिंक इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है 10 आउट ऑफ 10, हमें जो भी स्कोरिंग, जो भी ग्रेडिंग, नहीं, हाँ, लाइक इट्स मैक्सिमम स्कोर इज 9, एंड आउट ऑफ 9 हमें जो भी स्कोरिंग इसके अंदर मिलेगा, उसके बेस पे हम लोग एलिजिबल होंगे कि हम कौन से कंट्री के लिए या फिर कौन कौन सी जगहों के लिए या हम अप्लाई कर सकते हैं. देन एनक्लेक्स के बारे में अभी तक जो हमें आइडिया था, लाइक जस्ट हमको ये पता था कि हाँ हमें एक एनक्लेक्स एग्जाम देना है, दैट्स इट. बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनक्लेक्स एग्जाम देने से पहले, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि वंस हमने डिसाइड किया कि हमको एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाके एज ए नर्स हमें क्या करना है, वर्क करना है, तो हमने सबसे पहले क्या दिया, एग्जाम दिया, ये इंग्लिश टेस्ट का, जो कि IELTS के नाम से हम जिसे जानते हैं, हमने ये एग्जाम दिया. देन हमें एनक्लेक्स एग्जाम के लिए अपीयर होने से पहले हमें क्या करना होगा, अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो टेस्टिंग बॉडी है, या आप बोल सकते हैं जो वेरिफिकेशन बॉडी है, जो कि आपके पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, एंड देन वो आपको एलिजिबिलिटी देगी, आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर द NCLEX-RN एग्जाम. एक बार आपको वेरिफिकेशन मिला कि हाँ आप वेरीफाई हो गए हैं एग्जाम के लिए, कि हाँ आप पर्टिकुलर इस कंट्री के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप एलिजिबल हैं, देन आपको देना होगा NCLEX एग्जाम. अब इस NCLEX एग्जाम को देने के लिए इसका जो पैटर्न आप लोगों के पास है, अगर हम पैटर्न की बात करें, सबसे पहली बात तो आपने जब इस एग्जाम के लिए क्या किया, वेरिफिकेशन हो गया आपका, एलिजिबिलिटी आपको मिल गई कि हाँ आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, आपने फॉर्म फिल किया. सबसे पहली बात, इसका कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता है कि इस तारीख को, इस डेट को ये आपका एग्जाम होगा. आपको चूज करना है, आपको
चूज करना है कि आपको ये एग्जाम कब देना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी एग्जाम डेट या शेड्यूल करना है, आपका एग्जाम क्या करना है, शेड्यूल करना है। एक बार जब आपको पता हो कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तब आपको ये एग्जाम देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डेट आपकी मिल जाएगी। दूसरी बात, जनरली हम जो नॉर्सेट देते हैं, अगर मैं इसको नॉर्सेट के साथ कंपेयर करते हुए चलूं, जनरली जब हम नॉर्सेट देते हैं तो नॉर्सेट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। आपको एग्जाम देना होगा, अगर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 4 सीट हैं आपके एग्जाम में, तो आपको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा कि आपको टॉप 4 के अंदर आना है। बट एनक्लेक्स में ऐसा नहीं है, आपको कोई कंपटीशन नहीं देना है, इट्स बेसिकली कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट, यानी कि दूसरी बात, एक तरह से ये क्वालिफिकेशन का एग्जाम है, आपको बस क्वालिफाइड होना है। आप कैसे, देखो मैं अगर इसको रिप्लेस करना चाहूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरह से हम अपने कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, जैसे ही हमने क्या किया, एग्जाम दिया, हम 4th ईयर पास हो गए, देन हमें क्या मिलता है, हमारे स्टेट काउंसिल से आरएम मिलता है। तो हमें तो किस बेसिस पे मिल जाता है, जो हमारी डिग्री होती है, हमने जहां से पास किया, हमने जहां से डिग्री कंप्लीट किया, उस बेसिस पे हमें क्या मिल गया, आरएम मिल गया। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आपको ये आरएन लेने के लिए, जैसे हमें तो यहाँ अपने कंट्री में सिर्फ अप्लाई करने होता है कि भैया देखिए हमने आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम डिप्लोमा किया है, अब हमें क्या चाहिए, आरएम चाहिए। बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये आरएम चाहिए तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा, ये एनक्लेक्स एग्जाम देना पड़ेगा, आपको इसमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और अब देखिए, अब इसमें क्वालिफिकेशन का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं या सारे क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी एक रैंक आएगी, आपका एक स्कोर आएगा। बेसिकली आपको असेस करने के लिए, यानी जो आपने 4 साल पढ़ाई करी, जो 4 साल आपकी जो नॉलेज था, जो आपकी प्रैक्टिस था, वो इन क्वेश्चन के बेसिस पे 265 इट्स 265, आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे 85 to 265 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली जो कि कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, यहाँ पे होता है आपका मल्टीपल आंसरिंग क्वेश्चन, है ना। लाइक यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन के 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपके इस पॉइंट में ये यहाँ पर आपके स्कोर आ गए, यहाँ पे ऑप्शन थे सारे, अब जो जो अप्लाई होते हैं इस सिनेरियो पर या इस कंडीशन पे आपको वो टिक करना है। तो आप अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर 3 थे, ठीक है, और आपने 2 चूज किए, आपको तब भी क्या मिलेगा, इसका स्कोर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए 3 आंसर थे लेकिन आपने चौथा भी क्लिक किया, आपने 4th वन एक एक्स्ट्रा भी दे दिया, देन यू हैव टू फेस नेगेटिव मार्किंग। अब आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हो, आप उस कंट्री का एलिजिबिलिटी शो करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके लिए आपको वो मिनिमम 85 क्वेश्चन से आपको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपने इन 85 क्वेश्चंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, दैट मीन्स अब आपका एग्जाम वो आगे भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपको 265 तक जाने की जरूरत नहीं है। टोटल इस एग्जाम का टाइम होता है आपका 5 आवर्स का। तो अगर आपने इन 85 क्वेश्चन में उनको इतना सेटिस्फाइड कर दिया कि हाँ आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो ये आपका एग्जाम 85 क्वेश्चन पे भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है अगर आपने इस 85 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा नहीं किया तो वो 265 तक भी जा सकता है। तो 85 से 265 क्वेश्चन के बीच में वो क्या कर लेगा, आपका असेसमेंट कर लेगा। देन इसके बाद में जब जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन डन हुआ कि हाँ भाई आप आरएम के लिए एलिजिबल हो, देन अगेन वही कंट्री वाइज आपको फिर से जो उनका पर्टिकुलर कंट्री का जो एग्जाम होता है आपको वो देना होता है। उसके बाद में फाइनली जाकर के क्या होते हैं, आप वहां पर एज ए नर्स आप क्या कर सकते हैं, काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये जहां पे हमने जितने भी स्टेप्स देखे, इन सब पे अलग अलग फीस चार्जेस है, अलग अलग स्टेज के अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग प्रोसेस है, हर कंट्री का अपना अलग अलग प्रोसेस है स्पेसिफिक। तो आप जिस भी कंट्री के लिए सोच रहे हैं, आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं। देन इसके बाद में अगर NCLEX एंड OET के बाद NCLEX एंड जो IELTS था ये मैंने आपको एक तरह से कॉमन तरीके से बताया। अब एक होता है इसका अल्टरनेट या आप बोल सकते हैं उससे बेटर, है ना, और थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। NCLEX एंड जो IELTS इन दोनों के कंबाइंडली अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको हो सकता है, लेकिन इजी टू क्रैक है या इजी टू क्वालिफाई है। OET के अंदर क्या है, बेसिकली ये एक सिंपल सा इंग्लिश टेस्ट है, और सबसे अच्छी बात ये कि ऑक्यूपेशनल यानी कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल बेस्ड है, यानी कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है उसके लिए स्पेसिफिक है, तो एक तरह से स्पेसिफिक एग्जाम है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों को एक बार में ये चीज नहीं समझ में आई, आप इनको बार बार देखिए, बार बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिए जाएंगे, आपको कोई भी डाउट लगता है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो कॉल नंबर है 9257575743 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको इन एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो भी इनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपके लिए एज ए मेंटोर जो लिया क्लारा जोसेफ है, जो आपके एज ए मेंटोर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो एज ए काउंसलर, एज ए मेंटोर ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, तो नर्सिंग एक्सपर्ट्स गुरुग्राम पे आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रिपरेशन, जैसा भी आप लोगों को लगता है सही आपको क्या करना चाहिए, आप इस चीज को लेकर के क्या हो सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके OET के NCLEX के जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट थे, नेगेटिव पॉइंट थे, वो आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स देने की जो लास्ट एज है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, कई बार हमारा उस एज ग्रुप में आकर के नहीं हो पाता है, तो हम फॉरेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, लाइफ स्टाइल और कुछ भी अगर हम देखें, अगर सब कुछ देखें, तो आप एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉरेन में जाकर के भी एज ए नर्स क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा कोई भी आपको अदर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी डाउट हो, अगर अभी करंट में जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका कोई भी डाउट उनको लगता है, आई थिंक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, आपको इतने सारी चीजें बताई गई हैं, आई थिंक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे हम।